इस एक्ट के बारे में पहले तो जिक्र करा जाएगा, फिर देन द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द RFCTLARR Act 2013. RFCTLARR Act full form is the right to fair compensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013. Then we will discuss the social impact assessment, which is Chapter 2 of the Act, compensation, Chapter 4, rehabilitation and resettlement, Chapter 5, and we will conclude with some remarks. Next, please. Now, the Land Acquisition Act of 1894 was the basis of acquisition of land till 2012. इसमें the ambit of public purpose, because land acquire करने के लिए we have to say that it is for public purpose. Government, the state has to justify that it is for public purpose. This act had a very wide definition of public purpose. It also included land that had to be given to private parties. Second, the balance of power was completely in favor of the government. Except for objection, the title holder had no recourse to any remedy. उनसे कुछ नहीं पूछा जाता था, उनसे कुछ नहीं उनको बताया जाता था. So police action was relied upon frequently. हम सबको मालूम है, we've all seen stories, we've heard stories, we've seen agitations that police force was used often to drive out people once the notice under Section 4 for acquisition of land was given. Then compensation for land would be given only to the title holders. And there was no arrangement or any kind of support for people who were dependent on that land or somehow deriving their livelihood from that land. Only cash compensation would be given. And often this would be below the prevailing market rate, because वो circle rate से related होता था, which usually is below the prevailing market rate. So compensation was given to title holders, and that was also less than what was the real actual value of the land. There was no provision for rehabilitation, resettlement of project affected families. Even for title holders, there was nothing. No redressal mechanism was created in the act except for objection, which used to be rejected by the DM after giving a notice. And the grievance mechanism was very court-centric. Act में ही लिखा हुआ था कि if any person has any problem, go to court. And going to court, we all know how long it takes. When I was the assessing officer in 1990s, early 1990s, Kanpur में मैं थी as assistant commissioner, I would have cases where returns would be filed showing income received by virtue of enhanced compensation, by virtue of interest on land acquired. And this acquisition would relate to 10 years, 15 years, 20 years back. तो मतलब इतना टाइम लग जाता था कोर्ट से लोगों को बेनिफिट मिलने के लिए. So because of all these factors, a lot of challenges were being faced by the country, by the civil society, by the landholders, by courts, by government, etc. Next, please. And iske challenges were large-scale displacement of project-affected families. Millions of people were deprived, were driven out of the land, and most of these people were the tribals and rural poor, because land ka acquisition mostly tribal areas mein ho raha tha and hota hai, and rural areas mein hota hai. So these are the people who have faced the brunt of the land acquisition process. Unka garibi ki halat mein wo aa jate hain because there would be no compensation for people who are dependent on the land. Compensation would be inadequate. It would come very late, and there was no effort made to provide any income sources to them. Income regeneration का कोई माध्यम नहीं बताया जा रहा था, बनाया जा रहा था, and they used to be profiteering from acquired land. तो जैसा अभी बताया गया है कि बहुत से बार ऐसा होता था कि 100 एकड़ की जरूरत है, 200 एकड़ ले लिया गया, लैंड बैंक में चला गया, एंड देन आगे जाके गवर्नमेंट ने, अथॉरिटी ने किसी को भी दे दिया on whatever terms, and this would be opaque, it would be behind the scene. So people's land is taken away and then it is used as for its monetary value. The government is earning, but the people who were owners of the land were not getting anything. This would lead to a lot of conflict and civil unrest. देखा है हम लोगों ने, सरदार सरोवर is an example कि कितने सालों तक वो agitation चला है, and even in tribal areas everywhere it has been a common feature कि most of the time land acquisition was attended by conflict and civil unrest, demonstration, police action, force, violence, etc. And all of this also used to result in delay in time, leading to time cost overrun.
Delayed project, meaning time cost overrun. And a lot of cases would be filed in court. So anyway, अपने courts are clogged with cases, choked with cases, और उसमें land acquisition के भी cases जा रहे होते थे. Time भी बहुत लगता था decision आने में, and court cases के numbers भी बढ़े हुए थे. Because of all these reasons, in 2023, the government enacted this RFCTLARR Act, which came into force on 26th September 2013. Now, the preamble of the Act is very interesting, and it is very indicative of what the government wanted and what it had in mind. It says that it wants to acquire land through consultation with local self-government and Gram Sabhas, a humane, participative, informed, and transparent process of land acquisition, causing least disturbance to landowners and other affected families, provide just and fair compensation, provide for rehabilitation and resettlement of the affected people, so that the cumulative outcome makes the affected people partners in progress and leads to an improvement in the social and economic status after retirement. So these were the values that have formed the basis of the new Land Acquisition Act. Next, please. So I will now start with certain provisions of the Act. So Chapter 1 is a preliminary chapter, and it has given some definitions, which are the most important part of how do we go about implementing the Act. So the Act has defined public purpose. This is a list of projects of public purpose for which land can be acquired by the government. For strategic purpose, defense, state police, safety of people, infrastructure projects, agro-processing, warehouses, cold storage, marketing infrastructure, for agriculture allied activities, meat processing, industrial corridors, mining activities, investment and manufacturing zones, water harvesting, water conservation structures, sanitation, government administered, government aided education and research schemes or institutions, sports, healthcare, tourism, transportation and space, any infrastructure facility notified by the Parliament, project for project affected families. Next, please. Housing for such income groups as notified by appropriate government, project for planned development of village or urban sites, housing for weaker sections in rural and urban areas, housing for poor or landless or persons residing in areas affected by natural calamities, persons displaced by any scheme of government, local authority, or corporation owned or controlled by a state, public-private partnership project for public purpose, where ownership vests with the government, project of private companies for public purpose. So in case of these two category of projects, consent of 70% of the people would be needed for PPP projects, and 80% of the people would be needed for projects that were to be run by private companies for public purpose. So ये जो consent लेने का आया है provision, that is a very important part of this act, which empowers the people. They have a say now कि हमें करवाना है कि नहीं करवाना है project अपने midst में. Now there are certain other definitions which I will discuss. Affected family includes family whose land or immovable property has been acquired, agricultural laborers, tenants, any form of usufruct right holders, sharecroppers, artisans, or who may be working in the affected area in the immediately preceding 3 years, or whose primary source of livelihood is affected. Scheduled tribes and other traditional forest dwellers who have lost any forest rights recognized under the Forest Rights Act 2006. Family whose primary source of livelihood for 3 years prior to the acquisition is dependent on forests and water bodies and includes gatherers of forest produce, hunters, fisher folks, and boatmen, and such livelihood is affected by the acquisition. Member of a family whose land assigned by central or state government has been acquired, family residing on any land in urban areas for immediately preceding 3 years or more, or whose primary source of livelihood for 3 years prior to the acquisition is affected. So
as we can see, the definition of affected family has been really broadened. It is not just the title holders who are the affected family. Anybody who is residing on that land, even though he does not have the title to that land, anybody residing on that land for the immediately uh, preceding 3 years, or earning his or her livelihood directly or indirectly from that land in the preceding 3 years prior to acquisition, will be treated as an affected family. So very wide definition of affected family, and those who are entitled to benefits. Next, please. Then appropriate government means the central government or the state government, depending on where the land to be acquired is situated. If the land is situated within the territory of a state, so it is the state government which is the appropriate authority. And if the land is to be, if the land is situated in a union territory, or if the land is going to be acquired union territory, except the union territory of Puducherry, and where the land is being acquired by the union territory of Puducherry. So for the union territory, central government is the appropriate agency. For projects of the central government is the appropriate agency, appropriate government. And where the project is an interstate project, then also the central government is the appropriate government. The district collector can be the appropriate government for a limited area of land in a district, which is notified by the government, state government. Now, what is the cost of acquisition? The cost of acquisition means cash compensation, solatium, interest, enhanced compensation by RNR authority or court, damage for damage caused to land and standing crop in the process, cost of land and building for settlement of displaced families, cost of development of infrastructure and amenities in the resettlement area in case the land acquisition is leading to displacement of population, cost of RNR as determined, administrative cost for acquisition of land both at project site and out of the project area land for rehabilitation and resettlement, cost of SIA study. Family includes a person, his or her spouse, minor children, minor brothers and sisters dependent on him, widows, divorcees, and women deserted by families shall be considered as separate families. An adult of either gender, with or without a spouse, shall be considered a separate family. Again, a very wide definition of family. Every adult member of the family, a boy or an adult boy or an adult girl, will be treated as a separate family. And also, widows, divorcees, and women who have been deserted by their families will be considered a separate family. And we will see how this is so important, how this makes the act such a welfare-oriented act. Landowner includes a person whose name is recorded in the land record as the owner. Any person granted forest rights under the FRA Act 2006 or under any other law. Holder of patta rights or assigned lands. Person interested means all person claiming an interest in the compensation. Scheduled tribe and other traditional forest dwellers who have lost any rights under the FRA Act 2006. Person interested in an easement affecting the land. Person having tenancy rights or a sharecropper. Any person whose primary source of livelihood is adversely affected. Requiring body means a company, body corporate, an institution, or any organization for which the land is being acquired and includes appropriate government. If the land is for its own use or for subsequent transfer for public purpose to any other entity under lease, license, or any other mode of transfer. So requiring body is also called the project proponent. So who is the project proponent? To whom the land will be given for further work. The transparent, consultative, participative, time-bound, fair, and humane nature of the land acquisition process under the Act has been guaranteed by the requirement for social impact assessment and the provision of compensation, rehabilitation, and resettlement. So we will now look at these 3 chapters. Chapter 2, which deals with the social impact assessment. Now, Section 4 is important. Whenever the appropriate government intends to acquire land for public purpose, it shall issue a notification for the conduct of a social impact assessment study in consultation with the concerned panchayat or municipality or municipal corporation. Notification will be placed in public domain. Public domain here will mean
It will be on the website of the appropriate government. It will be placed in the office of the Gram Sabha of the Panchayat, municipal corporation, municipality, in the office of the district collector and tehsil, and in any other manner in the area as may be permitted. Then SIA study will include assessment whether the proposed acquisition serves public purpose, estimation of affected families and number of families likely to be displaced, extent of public and private land, houses, settlements and other common properties likely to be affected, whether the land proposed to be acquired is the bare minimum needed for the project, whether alternate site for acquisition has been considered, social impacts of the project, nature and cost of addressing them, impact of these costs on the overall cost of the project vis-a-vis the benefits of the project, likely impact of land acquisition on livelihood of affected families, public and community properties, assets and infrastructures, public utilities, and social and cultural assets. Public hearing shall be conducted during the study to ascertain the views of the affected families, which will be recorded and included in the SIA report. The agency conducting SIA will also prepare the social impact management plan, listing the ameliorative measures required to address the impacts. SIA report to be submitted within 6 months from the date of its commencement. SIA study report and SIMP will be placed in public domain. In case of irrigation projects where EIA study is to be conducted, environmental impact study is to be conducted, SIA will not be carried out. Now, the SIA report will be evaluated by an expert group comprising of 2 non-government social scientists, 2 representatives of local body, 2 experts on rehabilitation, 1 technical expert in the subject relating to the project. The expert group shall give its report within 2 months. If the expert group concludes that project does not serve public purpose or the social cost and adverse social impacts outweigh the potential benefits, it will recommend that the project be abandoned. The appropriate government can override the recommendation for reasons to be recorded. That is, in case the expert group says that the project is not feasible, it should be abandoned, gives that report, the appropriate government can still override that recommendation, provided it gives the reasons in recording. It gives the reasons in writing. If expert group report is favorable to the project, it will additionally specify that land required is the bare minimum. In a way, the expert group is certifying again that the land required is the bare minimum and there are no other less displacing option. Appropriate government may recommend the acquisition of land after examining report of SIA, expert group and collector. Decision to be made public. SIA study to be exempted when land is acquired, invoking the urgency clause under section 40. Every state is required to identify the agencies for conducting SIA studies. Universities and educational research institutions of repute have been designated as SIA agencies by states and union territories. Then we come to chapter 4, which talks about the process of acquisition, the notification and acquisition process. Section 11, very important, preliminary notification to be issued for acquisition of land. It will state the nature of public purpose involved, details of land to be acquired, reasons necessitating displacement, summary of SIA report, particulars of R&R administrator. No transaction of land specified in the notification can be made thereafter. So once a particular land has been included in this preliminary notification, the owners of those land cannot enter into transaction for sale. If notification under section 11 is not issued within 12 months of the SIA expert group report, the SIA will be deemed to have lapsed, requiring fresh study. Any person interested in the land to be acquired can file objection as to the area and suitability of land to be acquired, justification of public purpose, findings of SIA report. After giving an opportunity of being heard, the collector will submit a report along with his recommendations to the appropriate government for final decision. After preliminary notification, the R&R administrator will conduct a survey and census of affected families and prepare draft R&R scheme, which will include. Now, R&R administrator is an officer of the government, usually a local
he's usually an officer of the district administration. He or she is designated as an administrator, and the administrator is responsible for the formulation of the RNR plan, for the RNR scheme, and also for the administering of the scheme. RNR entitlements of each landholder and landers whose livelihood primarily depends on the land. In case resettlement of affected families is required, then a list of government buildings to be provided in the resettlement area, details of public amenities and infrastructural facilities to be provided, time limit for implementing the RNR scheme. So the RNR scheme will be prepared by the administrator, who is a local official, sufficiently senior, and it will contain all of this information. Draft RNR scheme will be placed in the public domain. At this point, a public hearing will be conducted in every Gram Sabha or municipality where more than 25% of land belonging to that body is being acquired. Section 19. If appropriate government is satisfied that the land is required for public purpose, it will make a declaration indicating the districts or the territorial division where the land is situated, its approximate area, nature of public purpose, place where the plan of the land, if prepared, can be inspected. It will also include details of area identified as resettlement area. Summary of the RNR scheme will also be provided. Before the declaration, the requiring body should have deposited the amount towards the cost of acquisition of land. So this is again a very important provision incorporated in this act, that the money has to be deposited by the project proponent before the actual process of acquisition begins. Declaration under Section 19 shall be made within 12 months of notification under Section 11. Declaration shall be placed in public domain. Collector shall issue public notice after this declaration under Section 19 has been made. The collector shall issue public notice indicating the particulars of the land that the appropriate government intends to take possession of, and also inform that the claims for compensation and RNR for all the interested persons may be submitted to him. All persons interested in the land shall file their claims within 6 months of the declaration. Section 25 says that the collector will make individual award within 12 months of the date of declaration under Section 19, failing which acquisition proceedings shall lapse. Now, determination of market value of land. How do we calculate the market value of land which has to be paid in the form of compensation? First of all, the market value, if any, specified in the Indian Stamp Act 1899 for the registration of sale deed or agreement to sell in the area in which the land is situated. So this is essentially the circle rate. Then the average sale price of similar type of land situated in nearest village or vicinity in the immediately preceding 3 years. Then consented amount of compensation agreed upon in case of land acquisition if it is for the company or PPP project. So in the earlier act, it was only the circle rate that used to be taken as a basis for determining the value of the land. But today in this act, 3 provisions have been provided. There are 3 scenarios. One is the circle rate. Then the second is the average sale price of similar properties in the last 3 years. And the third is that if there is some agreement between the project proponent and the title holders about the compensation, cash compensation amount, that can be taken. Whichever of the 3 is higher will be taken as the market value of land. The date of determination of market value will be the date of issue of notification under Section 11. Now, how do we calculate the average sale price which will be used? The average sale price shall be determined by taking the average of the 1/2 of the total number of sale deeds or agreement to sell with the highest sale price. So if say 10 agreements had been registered in last 3 years in a particular area, then the top 5, those 5 which have the highest value will be taken, and the average of those 5 will be taken as the average sale price. If market value cannot be determined using the above factors, the appropriate government shall notify the minimum price per unit area with regard to similar type of land situated in adjoining areas. Requiring body can offer up to 25% of calculated value of land in form of shares, but it cannot compel a landowner to take the shares.
Before initiation of acquisition proceedings, collector shall update the market value of land based on the prevailing market rates in that area. That means the collector is required to update the circle rate of that area, keeping in mind the prevailing market rates before he commences the process of acquisition. Now, what is the amount of compensation for landowners? That is to be prepared according to first schedule. So the amount of compensation to landowners is the market value of land plus multiplied by a factor of one in urban areas or a factor of 2 in rural areas, plus cost of trees, plants, standing crop, buildings, assets attached to land, plus payment for damages, if any, sustained by the landowner in the course of the acquisition process. Then the landowner shall be entitled to an amount calculated at the rate of 12% per annum on market value of land beginning from date of publication of SIA study under section 4 till the date of the award or taking over of the possession, whichever is earlier. Additionally, a sum equivalent to 100% of the compensation amount shall be paid as solatium. So what is the final award? The final award shall consist of compensation for land, which we have seen how that is calculated, plus solatium, which doubles the compensation amount. If 100 rupees is a compensation for land, 100 rupees have to be added by way of solatium, plus interest at the rate of 12% on market value of land from the date of notification under section 4 till the award or till the taking of the possession, whichever is earlier. The collector shall take possession of land after full payment of compensation. Again, a very important provision that now people just cannot be driven out of their land. Unless they have been paid full amount of compensation, they cannot be divested of their land. Cash compensation to be paid within 3 months and R&R benefits within 6 months of date of award. Summary of entire land acquisition proceedings, including compensation awarded to each individual, shall be placed on website created for the purpose. Now, Administrator R&R, Commissioner R&R, National Monitoring Committee on R&R, State Monitoring Committee on R&R, Monitoring Committee at project level, then the Land Acquisition, Resettlement and Rehabilitation Authority. So these are all the functionaries, authority plus these functionaries who will be looking after or managing different aspects of the acquisition process and making sure that compensation is adequate, it reaches the intended people, and that the rehabilitation and resettlement action is bona fide, acceptable, and welfare driven. Chapter 5, Rehabilitation and Resettlement Award. Section 31. Collector shall pass R&R award for each affected family in terms of entitlement provided in second schedule, which shall include R&R amount payable, bank account for transfer of amount. In case there is a displacement of the population, then further details have to be provided. Particulars to be provided in case of displacement of population, details of house or house site provided, land allotted to displaced families, one-time subsistence allowance and transport allowance, payment for cattle shed and petty shops, one-time amount to artisans and small traders, details of mandatory employment to be provided to family members, details of fishing rights if provided, annuity and other entitlements, details of special provisions for SC/ST. So this R&R award will also contain details of the entitlements that these people, that the affected people will receive if there is displacement of population, if they are being displaced. Then what are the entitlements as per second schedule in monetary terms? Housing unit, house of Indira Awas Yojana size will be given in rural areas to people who lose their homes. Constructed house of at least 50 square meter plinth area will be given in urban areas, or cash will be given. Now, in urban areas, a cash of 1,50,000 will be given, and in rural areas, the cost of building the house will be given. In hydel projects, affected landowners may be given 1 acre of land in lieu of cash. SC and ST will get an equivalent land that they have lost, or 2.5 acres, whichever is more. If land is acquired for urbanization purpose, 20% of developed land to be reserved for land losers, and it will be offered to them in proportion to their land acquired. Cost of this land will be reduced from cash compensation paid. Then 1 job per family will be given, or
One-time payment of rupees 5 lakhs will be given per family, or an annuity of rupees 2,000 per month will be given for 20 years. Each affected family will be given 3,000 rupees subsistence allowance for 1 year. This is a monthly allowance. SC/ST shall receive an additional 50,000 rupees. Affected families in scheduled areas shall be relocated in similar ecological zone to preserve economic opportunities, language, culture, and community life. One-time transportation allowance of 50,000 will be given. Affected family having cattle or cattle shed or petty shop will get 25,000 rupees. Each affected family of artisan, small trader, or self-employed to get a one-time minimum amount of rupees 25,000. One-time resettlement allowance of rupees 50,000. In an irrigation or hydel project, affected family may be granted fishing rights. Stamp duty or other fee for registration of land or house allotted to be borne by requiring body. Now, what happens is the Act is very clear that this is a minimum that has to be given. States or the appropriate authority may decide to give more, keeping in mind the inflation, or even otherwise, if they want to give more, they can give more than this, but this is a bare minimum that they need to give. Land or house will be in the joint name of husband and wife. Possession of land shall be taken after full payment. Infrastructural entitlements in resettlement area shall be provided within 18 months of date of award. In case of irrigation on hydel project, rehabilitation and resettlement shall be completed 6 months before the submergence of land. Displacement of affected people shall only take place after the completion of R&R process. Special safeguards have been provided for the displaced scheduled tribes who are residing in the 5th schedule and 6th schedule area. All benefits, including reservation for SC and ST, shall continue in the resettlement area. Then another thing is that whenever money is to be given, is to be transferred in the account will be in the joint name of husband and wife. Now, what are the infrastructure? Yes. Next, please. What are the infrastructure and public utilities in resettlement areas that have to be provided? They are listed in 3rd schedule of the Act. Roads within the area and all weather link roads, drainage and sanitation, safe source of drinking water, water for cattle, grazing land, fair price shops, post office, seed cum fertilizer storage facility, irrigation facilities, public transport facilities to nearby growth centers or urban localities, burial and cremation ground, individual toilets and electricity connection, Anganwadi, school, primary health center, sub-health center within 2 kilometers, community center, veterinary services, security arrangements, separate land for traditional tribal institutions, forest dweller families must be provided with the forest rights on non-timber forest produce and common property resources. Now, there are some other important provisions of the Act which I have listed here. R&R benefit can be quantified into monetary terms and deposited in account to be managed by the administrator under the supervision of collector. No civil court other than High Court under Article 226 or Article 227 of the Constitution and the Supreme Court shall have jurisdiction to entertain any dispute related to acquisition. No injunction to be granted by any court in any manner. Award passed by Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority can be appealed in High Court. So what happens is that if an affected family or a person interested is unhappy with any aspect of the award, he or she can put the claim in the authority. You can file a claim in the authority and the authority will decide on their claim. And if the person is unhappy with the decision, with the outcome of his claim in the authority, then that person can appeal against that decision in High Court. So the district courts, the lower courts are completely out of the picture. The appropriate government can withdraw from the acquisition of any land of which possession has not been taken, but in such case, compensation will have to be paid by the authority for damages suffered by landowner by virtue of the acquisition proceedings. No income tax or stamp duty shall be levied on any award or agreement under the Act. Purpose for which land is acquired cannot be changed. No change of ownership without the permission of appropriate authority is permitted. Appropriate government, wherever possible,
shall be free to exercise the option of taking land on lease instead of acquiring it. So this is actually the sum total in brief of the main provisions of the Act. As is evident, it is a participative process. We have seen that at the time of the conduction of the SIA study, there is a public hearing. And at the time of the preparation, once the draft RNR scheme is prepared, then again it is submitted before the Gram Sabha or the municipality or municipal corporation for public hearing. And whatever their views are, whatever the affected families have to say or object or give their views, that are also taken into account. So there are two phases. There are two occasions where there is public hearing. Public is directly involved. The second aspect about this act is that it is very time bound. As we have seen, notification under Section 4 is issued for conducting SIA study. The SIA study must be conducted within 6 months. Once the expert committee is set up, within 2 months, the expert committee must give its report. Then within 1 year of the commencement, within 1 year of notification under Section 4, preliminary notification under Section 11 has to be issued. Within 1 year of preliminary notification, declaration under Section 19 has to be issued. And within 1 year of declaration, compensation, etc., has to be paid. And only after the compensation is paid that the land can be acquired, and people can be displaced only after complete arrangements have been made for them in the resettlement area. Now, coming to the conclusion, the Act established a comprehensive mechanism with safeguards for the welfare of affected families. Actually, I have, while I was in Terry, I was conducting training programs on the Act, and where a number of state government officials and also PSUs would come. They would attend these training programs, and I used to hear a lot about how their experiences are under the 2013 Act. So most of them said that now everything is so streamlined, everything is so clear, and everything is written down, and the safeguards of the people is so much taken care of that it is easy for them to follow the Act. They just need to abide by the provisions, they need to follow the timelines, and things get done. Acquisition is still a contentious issue. Some landowners willing to give, some not. Now we have seen, actually another thing they said was that in many instances when a notification is issued that land is to be acquired in a particular area, many times people come to them saying, please acquire my land also. Because what happens is in urban areas, they're getting twice the compensation, and in rural areas, they're getting 4 times the amount. So it has now become very lucrative for them to part with the land, those who want to part with the land. In 2017, I had gone to Haryana. I had gone to 2 villages in Haryana. I was conducting a study on cooking fuel options. And I was speaking to an old lady in one house, old lady who hardly ventured out of the village. And she said, we want our land to be acquired because we'll get 4 times the compensation. So that is the level of understanding and knowledge that people have about the Act. So there is a section which is happy with this Act because now they're able to monetize their land. But again, there are people who are not willing to sell their land, who do not want to be parted with their land. An example of this is an oil refinery that was proposed to be set up in Ratnagiri district. In 2018, the government declared that this would be the world's largest oil refinery, 60 million tons per annum was the capacity. It would be set up in Ratnagiri district on an area of 5,000 acres. However, there was so much opposition in that region that the government decided to shift the site. In the new site also, they said, okay, we will acquire less land. 15,000 acres, so they came down to 6,200 acres, but they were able to acquire only 2,900 acres. There is so much opposition that ultimately in 2025, the government has abandoned the project. Now the government is talking of setting up 2 or 3 smaller refineries at other places in Gujarat or Andhra Pradesh. They're not very clear if they will continue with Ratnagiri as a site. The people were very adamant because Ratnagiri is a mango growing district. They get about 2,000 crores per annum from mango, plus fishing. That's also a big industry there, and there is tourism. And also they have some cultural artifacts. Geoglyphs have been found there. These are prehistoric etchings
have been found there. So people there were very adamant that we do not want to part with the land. And land acquisition process is not a very cut and dried process. There is a lot of negotiation, bargaining, lobbying, politicking, which is a part of the process. Uh, and it also depends on the social and political capital of the community whose land is being taken away. How much they get, what benefits they are getting, what rates they are getting also depends on the negotiating power. We had gone to Jewar International Airport area in 2020 February, just before COVID. So I wanted to study the impact of the impending displacement on women. So we had gone to two villages there. The villagers said that, and at that time in 2019, actually, the first phase of acquisition had started. About 1,200 hectares of land had been acquired. They had been 1,400 crores was being handed out for that first phase, and 7 villages were affected. And these would all be displaced. So the people there said that in the beginning, the government was offering us 2,300 rupees per square meter. But then we bargained and we negotiated, so the amount was increased. So it's a bargaining. It's a space where there is a lot of bargaining and negotiation. Many times, project proponents want to give as little as possible, and of course, the affected people want to get as much as they can, which is understandable. One more thing that I've noticed is that where a project is funded by the World Bank or by ADB, then the RNR is taken care of more seriously. Quite seriously, it is taken care of because World Bank is monitoring it. But in non-bank funded projects, sometimes it happens that people are not given all the benefits or as little as possible that the project proponent can get away with is given. Now, this new Land Act has also introduced an element of reasonableness and demand for land due to high cost of acquisition. The cost of acquisition has become so heavy. Sometimes it is almost half the total cost of the project. So now the project proponents, the requiring bodies have become very careful. They're only looking at that much land to acquire as they need, against the earlier habit where 100 acres is required, but the government goes ahead and acquires much more than that. Now people have become very careful because they have to part with money, they have to pay compensation, they have to resettle people, which is a big deal. Then it has also prompted the use of other modes of land aggregation: purchase, leasing, and pooling. So recently, the government of Haryana has come out with a scheme. Actually, they want to go in for multimodal transportation in Gurgaon, and for that they need some land for metro. They have recently informed the landowners that they can either sell the land to the government at 25% more, or the land will be acquired. So purchase is also becoming an option. And in purchase, what happens is that everything is included in it. So many times project proponents are just paying a cash amount and getting away with it, which is more than what they would be paying under the acquisition process. But then they do not have to take care of other things. Then leasing is also an option that is being employed, especially in the renewable energy sector. And pooling is also being looked at. We have the example of we have an example of a township called Magarpatta in Pune, where 300 acres of land was pooled by about 130 farmers. And this IT park has come up. It has residential complex, it has schools, it has hospitals, and it was a very successful project. Then after Telangana was carved out of Andhra Pradesh, had to build a new capital, and they decided to build it at Amravati. So in 2014, the Amravati Capital Region Development Act was passed, and they opted for land pooling. So they decided to take 53,000 acres of land from farmers, pool it, and then develop their capital. 30,000 acres of land had been brought together before Chandrababu government lost their mandate, and during the intervening period, things came to a standstill. After Mr. Naidu has come back to power, the process has started again. Now they're going for pooling another 23,000 acres. So pooling options are also being explored as a way of
making sure that the affected families also get the benefit of development that follows when some project comes up. So thank you so much. And now we are open to question answers. Thank you. थैंक यू मैम। पूरी तरह से एक देखा जाए तो एकदम कॉम्प्रिहेंसिव, और ये भी एक जो फर्क शुरू से मुझे लग रहा था कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर का और एकेडमिक्स के बीच का जो एक फर्क होता है वो भी दिख रहा था। एकेडमिशियन नॉर्मली शब्द के मामले में बहुत कृपण नहीं होता है, लेकिन ऑफिसर जरूर होते हैं। उनके लिए प्रोविजन का मतलब प्रोविजन होता है, और जब टीचर बात करता है तो टीचर के लिए प्रोविजन का मतलब पूरा पूरा एनालिसिस होती है। बहुत अच्छा लगा मैम, पूरे के पूरे आपने उस पूरे प्रोविजन को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली रखा। आपको आभार, आपका आभार। मैं आमंत्रित करूंगा, यहाँ पे बहुत समृद्ध मंच बैठा हुआ है। मैं सबसे आग्रह करूंगा कि आप अपने सवाल जो भी इस एक्ट से संबंधित हों उनको जरूर आपके द्वारा रखा जाए। अ, अगर कोई सवाल हो तो, और नहीं सवाल होगा तो फिर हम लोग दूसरे मोड में थोड़ा सा और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम सवाल आमंत्रित करते हैं। किसी का कोई सवाल, इस पर कोई क्वेश्चन बन रहा हो अगर, तो जरूर आप पूछे मैम से। अ, ऐसा लग रहा है कि कोई सवाल नहीं है, क्योंकि आपने हर चीज को बहुत स्पष्ट रखा है, तो शायद सवाल बनते नहीं हैं। फिर भी हम लोगों के बीच एक बहुत ही बड़े एक्सपर्ट के रूप में प्रोफेसर एपी तिवारी सर बैठे हुए हैं। सर, मैम ने जिस तरह से इस एक्ट का वर्णन किया है, उसके बाद डिस्प्यूट्स के बहुत सारे ऑप्शन दिखते नहीं हैं। ऐसा लगता है कि फिर तो कोई डिस्प्यूट होना ही नहीं चाहिए, और इसके बावजूद भी कोई भी एग्जीबिशन कोई भी अधिग्रहण बिना विवाद के हो नहीं पा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है, और फिर इन कारणों के शमन के क्या उपाय किए जा सकते हैं इन एक्ट के होते हुए भी? मैं प्रोफेसर एपी तिवारी सर को आमंत्रित करूंगा। सर, थोड़ी छोटी सी टिप्पणी आपकी, कि मैम ने जो कहा उसके बाद तो कुछ दिखता नहीं है कहीं से। ऐसा नहीं लगता कि फिर विवाद के क्या, क्या विषय हो सकते हैं, लेकिन फिर भी होते हैं, तो ऐसा क्यों है? Thank you so much for giving me an opportunity to make a brief comment on the presentation. In my considered opinion, there is no denying the fact that Dr. Jain has made a very comprehensive presentation, especially relating to the latest Land Acquisition Act. But there are few, say, problematics. Problem one is how to estimate the cost and benefits of transference of land holdings, transference of land from farmers to the government or to the private sector, or to a project which is under triple PPP, public-private partnership. I think the problem which arises, the problem in terms of the conflict of interest arises, is associated with the hidden costs of transference of land from landowner to some other entity, despite the fact that there is a provision of compensation. But as you very nicely mentioned in your, say, introductory remarks, that land is not only a piece of land. It is associated with the psychological dimension of, say, ownership, the ancestral property. Economic compensation is there. Let me highlight this point, that economic compensation is there
economic costs are considered, but the cultural, social, and environmental costs are largely not reckoned upon, not estimated. And why? The question is why? Because most of the cultural and social, apart from environmental costs, are intangible. The only tangible costs are being considered in the process of making compensation, and largely the intangible costs and also conversely the benefits are being not taken into account. In fact, as a student of say social science, I am tempted to recall one national seminar which was organized by the government of Uttar Pradesh way back in 1997. It was 3 days seminar, and the seminar title of the seminar was Development Strategy of the Eastern Uttar Pradesh. In the first technical session, in which there was presence of late Professor S.P. Nagendra, he was eminent sociologist, I raised this point that in Eastern Uttar Pradesh, the cultural, social, and environmental cost of development is low as compared to other regions, especially the Western Uttar Pradesh. So what I would like to lament upon here in connection with the Land Acquisition Act, that compensation is being paid, but there is a ample scope of conflict because of the divergence of benefits in terms of tangible and non-tangible benefits. Moreover, one study which we conducted in the early 80s with the help of NSS volunteers, it was conducted for 2 villages, Bataha and Saboli villages adjoining the Aliganj scheme, Aliganj LDA scheme. We came to the conclusion that after the compensation was paid to the landowners, the incidence poverty increased significantly. Only few could make utilization of the compensation for productive purpose. Largely, the villagers utilized that compensation for luxurious say consumption, especially they spent the amount on consumption of liquor, and the result was low literacy, low generation of income, and taken as a whole, increase in the incidence of poverty. तो मेरा जो एक विनम्र निवेदन है कि यह प्रावधान भी इस एक्ट में, अधिनियम में है कि राज्य सरकारें हों या भविष्य में भी उसमें संशोधन की संभावना है, तो इस प्रकार के संशोधन किए जाएं कि जो कंपनसेशन उन्हें प्राप्त हो रहा है उसका वो उत्पादक कार्यों में उपयोग कैसे करें। और इसका मतलब ये हुआ the land transference and the productive generation of income should be correlated. वो कैसे करेगी सरकार? जैसे उत्तर प्रदेश का उदाहरण लेना चाहेंगे हम यहाँ पर। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में लैंड डेवलपमेंट बैंक स्थापित किया है। उसका पर्पस क्या है? टू फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट फॉर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। तो ये जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैं उनमें किस प्रकार कह सकते हैं जो मासेस हैं, जो विलेजर्स हैं स्पेशली, उनको कैसे हम सम्मिलित करें, उनको प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट में कैसे सम्मिलित करें। एक डॉक्टर साहब एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जैसे हमने इसकी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी नहीं की है, बहुत साइंटिफिक स्टडी नहीं, प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने के बाद ये जहां से एक्सप्रेसवे जा रहा है उसके दोनों किनारे जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसमें सिग्निफिकेंट चेंज आया है। मेरी फाइंडिंग ये है कि कॉमर्शियलाइजेशन बढ़ा है क्रॉप्स का, तो ये भी एक पॉजिटिव इफेक्ट है। तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स का
एक समय का अध्ययन करने के लिए समाज वैज्ञानिकों को भी आगे आना होगा। और मैं समझता हूं कि इसमें जहां तक, क्योंकि वो एस्पेक्ट जो दिखाया गया था कि जो इक्विटी का एस्पेक्ट है, जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का एस्पेक्ट है, जैसे मैंने कहा कि अगर लैंड को अक्वायर किया गया एलडीए द्वारा, तो उसके बाद तो विलेजर्स में या विलेजर्स के हाउस होल्ड्स लेवल पर पॉवर्टी का इंसिडेंस बढ़ा था। तो ये कुछ विचारणीय पॉइंट हैं जिनको मैं साझा करना चाहता था, और नम्र निवेदन के साथ धन्यवाद। May I respond? बहुत जी जी मैम। सर, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये 2019 में हमने एक स्टडी करी थी, केएमपी एक्सप्रेसवे इधर पलवल, कुंडली मानेसर पलवल का, पलवल एरिया में, उसमें मानेसर एरिया में करा था, गांव में गए थे। लैंड थोड़ा उन्होंने लिया था बिकॉज इट वाज अ लीनियर प्रोजेक्ट, तो थोड़ा थोड़ा लैंड लिया गया था, पैसा दिया गया था। सर, ये बड़ा लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड जो कुछ भी सोशल और इकोनॉमिकल और इकोनॉमिक, सोशल और इमोशनल चेंजेस हो रहे हैं विद इन फैमिली एंड कम्युनिटी, बड़े नुआंस्ड हैं। जो यंगर जनरेशन है वो लैंड एक्विजिशन चाहती है, दे डोंट वांट टू वर्क इन एग्रीकल्चर, और इतना अच्छा पैसा मिलने लग गया है लैंड से कि दे वांट टू लीव, कि हम इस जमीन का क्या करेंगे। एग्रीकल्चर इज नॉट वेरी रेम्यूनरेटिव, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इट इज डिपेंडेंट ऑन सो मेनी फैक्टर्स, नाउ क्लाइमेट पर डिपेंड करता है। तो उनको लगता है कि पैसा मिल जाए, तो एक तबका है जो चाहता है कि लैंड एक्वायर किया जाए और उस पैसे से वो लोग कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं। जो पेरी अर्बन एरियाज हैं, अगेन दिस केपी एक्सप्रेसवे वाज अ पेरी अर्बन एरिया, तो यहाँ पर विलेजर्स की को बहुत नॉलेज है, दे नो व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट आर द बिजनेसेस दे कैन डू, सोशल मीडिया कनेक्शंस बढ़िया है, कम्युनिकेशन लिंक्स अच्छे हैं, उनके सेम बिरादरी के लोग जगह जगह पर हैं, दे नो क्या करना है क्या नहीं करना। लॉट ऑफ पीपल आर इन्वेस्टिंग मनी इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, कि अपना कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट कर लिया, रेंटल इनकम कर ली, हाउसिंग यूनिट्स चला लिए, कुछ और भी कर लिया। तो कुछ जो समझदार एक वर्ग है, तो दे आर मेकिंग गुड यूज ऑफ द मनी दैट दे आर गेटिंग। बट इट इज ऑल्सो ट्रू कि ये substantial amount of money is also going on building big houses, on buying big cars, on conspicuous consumption, on alcoholism, etc. वो भी एक तथ्य है, वो भी एक सच्चाई है। तो यंग विमेन जो हैं, दे आर विलिंग फॉर लैंड एक्विजिशन, कि गांव से निकलेंगे, गांव का जो माहौल है उससे निकलेंगे, कहीं और हम जाएंगे। ओल्डर जनरेशन जो है 50 एंड अबव की है, दे अपोज लैंड एक्विजिशन बिकॉज पूरी जिंदगी उनकी वहीं गई है, दे डू नॉट नो कहाँ आगे जाके क्या करेंगे, दे आर नॉट सो ओपन टू चेंज। तो बहुत ही नुआंस्ड है ये जो इमोशंस हैं, एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के। बट इट इज ट्रू कि थोड़े सम अमाउंट ऑफ एजुकेशन लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी इज रिक्वायर्ड। This is something I have also mentioned in my paper, KMP Expressway का पेपर निकाला था हमने 2021 में, उसमें I had mentioned कि some amount of financial literacy is required, because उसमें हमारी यही finding थी कि what are the different compensation options that we can adopt, कि एक तो कैश देते हैं, FD के फॉर्म में दे दें, शेयर्स के फॉर्म में दे दें, और कुछ कर दिया जाए, एन्युटी के फॉर्म में हो जाए, तो लोगों का गवर्नमेंट के प्रति, गवर्नमेंट में विश्वास नहीं है। They say you give us the money and we'll decide what to do with the money. So I think it would be important to educate people कि जहां पर आप पैसा वितरण कर रहे हैं, compensation आप दे रहे हैं, for example फर्स्ट फेज में 1400 crores बटा जेवर में 7 villages में, अगर उस वक्त 2 दिन 3 दिन की उनका फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप लगाए जाएं कि these are the options, आप ऐसे ऐसे पैसा खर्च कर सकते हैं, तो दैट इज समथिंग कि वो लोग उस बारे में सोचेंगे, समझेंगे, राय मशवरा करेंगे, और मे बी वो लोग उसको ठीक से इन्वेस्ट करेंगे। बट पेरी अर्बन एरिया में बाय एंड लार्ज लोगों में समझदारी आ रही है, रूरल एरियाज में थोड़ा ज़्यादा चैलेंज है। सो आई एग्री विद सर कि अलग अलग तरीके के इसके आउटकम्स हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एनटीपीसी है, एनटीपीसी जब लैंड एक्वायर करता है तो उनका एक अपना यूनिट है, आरएनआर यूनिट है, एंड दे डू अ ग्रेट जॉब।
कि पूरे टाइम वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के संग लगे रहते हैं और जो कुछ भी बेनिफिट्स देने हैं, जो कुछ भी करना है, आगे से आगे बढ़ के वो करते हैं। दे एक्सप्लेन टू पीपल, मॉनिटरिंग अच्छी कराते हैं, अच्छे से उसको उन्होंने RNR फॉर्मुलेट करा हुआ है। तो बाय एंड लार्ज पीपल आर सेटिस्फाइड। रिलोकेट भी वो किए जाते हैं लोग, बट NTPC मेक श्योर कि पीपल रिमेन हैप्पी एंड उनके लिए बेनिफिशियल हो ये पूरा प्रोसेस। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरिंग बॉडी कि किस तरह उसके आउटकम्स निकल के सामने आ रहे हैं। थैंक यू मैम। हम लोग के बीच में अरुण सर है, जितेंद्र सर है, सरोज सर और सर है। हम चार लोगों से 5-5 मिनट की टिप्पणी चाहेंगे। सबसे पहले मैं अरुण सर की तरफ आना चाहूंगा। तिवारी सर ने एक बड़ा अच्छा सा टर्म यूज किया अभी, सोशियो कल्चरल इमोशनल कास्ट। सर आप समाज वैज्ञानिक हैं और समाज के लंबा अध्ययन किया है आपने, समाज को जानते समझते हैं। सर मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आखिर इस कास्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम अप्रोक्सीमेट करेंगे कि ये कास्ट कैसे निकाली जाएगी। जो सोशियो कल्चरल इमोशनल कास्ट की बात हो रही है अभी तिवारी सर ने कहा, और ये हकीकत है। ये भी सही है कि नई पीढ़ी बहुत जल्दी चाहती है कि हाँ हमारे यहाँ बगल से निकल जाए। कुछ लोग तो अप्रोच भी करते हैं कि एक्सप्रेस वे निकलता है तो हमारे बगल से निकले। लेकिन ये भी सही है सर कि उसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका ये कहना है कि इससे जो बेनिफिट होगा हमारा तो निकल गया, हमको तो केवल कैश मिला। जिसकी बात अभी तिवारी सर ने कहा था कि उसके अगल बगल की क्रॉपिंग का पैटर्न बदल गया, तो जिनका निकल गया उनको उस पैटर्न के बदलने से क्या लाभ मिलता है। फिर ऐसी परिस्थिति में वो सोशियो कल्चरल इमोशनल कास्ट का कैलकुलेशन कैसे किया जाए। अरुण सर आप 5 मिनट में। एक्चुअली मेरे दिमाग में तो डॉक्टर साहब से पूछने के लिए एक और प्रश्न आ रहा था। ये जी कैलकुलेशन तो बहुत कठिन है क्योंकि इसमें माइक्रो पर्सपेक्टिव है, मैक्रो है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, और हेल्थ है, सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, बहुत सारी चीजें हैं। और इसका एस्टिमेशन इतना आसान नहीं है कि वो हम एक फिगर बता दें कि इसका एनवायरमेंटल कॉस्ट इतने रुपए होगी और 10 साल बाद ये होगी। बड़ा मुश्किल काम है। बहुत सी चीजें हम सोचते नहीं है वो हो जाती हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, उस जमाने के हिसाब से जब हम भूखे थे और अमेरिका हम पे तमाम नियम लाता था फूड की सपोर्ट देने के लिए, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। बहुत सारे उसके पीछे लोग थे, रॉकफेलर फाउंडेशन थी, ये था वो था, पैसा था, वैज्ञानिक थे, एक्सटेंशन सेंटर थे, तमाम चीज थी। लेकिन आज जब हम देखते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जहां जहां हुआ वहाँ कितनी बर्बादी हो गई। वो कैंसर के स्थान बन गए। कैंसर ट्रेन्स चलती हैं वहां से, और वहां पे पानी का जो भूमि के अंदर जो जल का स्तर है वो इतना नीचे चला गया कि हर साल और अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है बिजली पर, ताकि वो सिंचाई कर सकें। और बहुत आज तो बहुत तरह से वहां पे त्राही त्राही मची हुई है। वेट डेजर्ट्स की प्रॉब्लम है तो, लेकिन ये सब कोई एंटिसिपेट नहीं कर सकता और बड़ा मुश्किल भी है। आज के ही लोग जिसको आजकल कहते हैं कि प्रेजेंट के प्रोजेक्ट की प्रेजेंट वैल्यू का ही एस्टिमेट हम कर सकते हैं और कुछ अजम्पशंस के लेके कर सकते हैं। कोई एब्सोल्यूट सेंस में ऐसा कुछ हो नहीं सकता। मैं जानता हूँ कि वो NTPC के जो प्रोजेक्ट्स होते थे, प्रोफेसर रथ हमारे यहाँ किया करते थे, R&R। तो है ठीक है, वो सरकार चाहती है ऐसा हो तो वो सब करना पड़ता है, लेकिन बहुत सारे लूप होल्स हैं। मेरे दिमाग में सवाल ये आ रहा था डॉक्टर साहब से पूछने के लिए कि कुछ दिनों पहले जब बिहार के इलेक्शन हो रहे थे तो वहाँ ये बात उठी थी कि बिहार का इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों नहीं हुआ उतनी तेजी से। तब कई नेताओं के मुंह से ऐसा सुनने को मिला था कि बिहार में जमीन नहीं है। ये मेरी समझ में नहीं आया, बिहार में जमीन क्यों नहीं है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन तो बहुत हाई है, यूपी की भी बहुत हाई है, बंगाल की भी बहुत हाई है, तो ये बिहार में जमीन क्यों नहीं है जिसको कि एक्वायर करके वहां पे इंडस्ट्री को खड़ा किया जा सके। सर
ये जो पॉलिटिशियंस बोल रहे हैं, आई मीन क्या उसका बैकग्राउंड है, आई डोंट नो क्यों इस तरह वो कर रहे हैं, बिकॉज हर स्टेट गवर्नमेंट के पास लैंड बैंक भी होता है, एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन कहीं भी होता है तो देयर आर मेनी फैक्टर्स फॉर इट. लैंड इज जस्ट नॉट वन फैक्टर, देयर आर मेनी मेनी फैक्टर्स. लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या है, लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, व्हाट इज द स्किल सेट अवेलेबल इन दैट एरिया, सप्लाई चेन क्या है, डिमांड का क्या है, तो मेनी थिंग्स आर देयर. सो पॉलिटिशियंस का मतलब आई वुड नॉट बी एबल टू से क्लियरली कि क्या रीजन है जो ऐसा बोल रहे हैं. तो ठीक है, ठीक. थैंक यू, थैंक यू. थैंक एक छोटी सी टिप्पणी मैं सरोज सर से चाहूंगा कि उसके बाद में एक बड़ा वाइब्रेंट सा मैं कमेंट चाहूंगा जितेंद्र सर से, जिसमें वो बताएंगे कि भारत में संपत्ति का अधिकार था और वो जमीन के इशू पर ही कुछ खत्म किया गया था. लेकिन उसके पहले मैं सरोज सर से चाहूंगा कि आप 5 मिनट में एक छोटी सी टिप्पणी दें और उसके बाद फिर जितेंद्र सर की तरफ हम लोग आएंगे. सरोज सर. सरोज सर, प्रोफेसर सरोज कुमार वर्मा सर. प्रोफेसर सरोज कुमार वर्मा हाँ सर. हाँ हाँ, सर. धन्यवाद जी. धन्यवाद धर्मेंद्र जी. जी लेकिन सर. मैं एक ऐसे मैं अगर अभी एक थेरेपी सेंटर में बैठा हुआ हूँ, इसलिए मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकता हूँ. कोई बात लेकिन नहीं मैं सर, ऐसे कोई ही बात नहीं. बात जी. कर लूंगा, मैं अपनी बात को रखूंगा. जी. जी. तो इसलिए मुझे कैमरा में ऑन नहीं कर सकता, क्षमा करेंगे मुझे इसलिए. तो ये सबसे पहले तो आप सर आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? नहीं नहीं. नहीं नहीं. चुनौतियां और समस्याएं हैं. सबसे पहले तो ये जो कानून बना, इसको राज्यों ने इसको बहुत नरम बना दिया. 2013 के केंद्रीय कानून में कॉन्सेंट और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के कड़े प्रावधान थे. लेकिन कई राज्यों ने, जैसे गुजरात ने, तेलंगाना ने, तमिलनाडु ने और महाराष्ट्र ने अपने स्वयं के नियम या संशोधन पारित किए, ताकि औद्योगिक गलियारों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए इन कड़े प्रावधानों को दरकिनार किया जा सके. इससे क्या हुआ कि सर आवाज नहीं आ रही है आपकी. कट रही है ना आवाज, बीच पे कभी आ जा रही है, कभी नहीं आ आवाज रही. अभी थेरेपी में है, आवाज की थेरेपी हो रही है. जी, आवाज नहीं आ रही है. ठीक है तो सर, हम आप ही की तरफ आते हैं सर. अभी एक सवाल अरुण सर ने किया था, वो सवाल भी आपके साथ रहेगा. आप उस प्रदेश को लीड भी करते हैं, तो निश्चित रूप से उस विधा को भी लीड करते हैं जिस विधा की तरफ संकेत मैम ने किया था अभी. उस विधा में भी हस्तक्षेप है आपका, राजनीति की विधा में भी. तो प्रोफेसर जितेंद्र नारायण सर, आप एल एन मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में प्रोफेसर रहे, डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, सोशल साइंस और लॉ रहे. लॉ की दृष्टि से भी, और ये जो एक पॉलिटिकल अप्रोच दिखाया मैम ने चाहे अरुण सर ने, मैं दोनों दृष्टि से 5 मिनट में आपकी टिप्पणी चाहूंगा सर इस विषय पर. आप क्या कहेंगे? एक दौर वो भी था जब जमीन को बगैर किसी उसके कोई कंपनसेशन दिए भी लेने का प्रोविजन किया गया था, एक दौर ये भी आया. तो इन दोनों के बीच में क्या फर्क है और कैसे ये विकास किस तरह से हुआ है? प्रोफेसर जितेंद्र नारायण सर. सबसे पहले तो मदुरई की इस धरती से, मीनाक्षी माता की धरती से सब लोगों को प्रणाम नमस्कार. बहुत पवित्र धरती पर भी बैठे हुए हैं. आवाज आ रही है धर्मेंद्र जी मेरी? हाँ फर्स्ट क्लास सर, एकदम फर्स्ट क्लास. और सबसे पहले तो मैम को मैं बहुत बधाई देता हूं. और मैं लॉ का विद्यार्थी हूं, तो बेयर एक्ट सुनने में भले आदमी को बोर करता हो, बट दैट वाज एन एक्सेलेंट एंड लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन was given. And I think that everybody is interested who have some land, or actually whatever you have said, that is a reality in two ways. But one question has been raised by Dharmendra ji. First of all, as a student of political science or as a student of constitution, I must say that yes, the first amendment was made because of the land. So land has always been a very important factor, as we know.
Kautilya's Arthashastra defines Manusyanam Virtirartha, Manusyavati Bhumi, Tasla Palno Payati or Shastramiti. He defined Arthashastra and said, what is the importance of land? For any kind of, you can say, occupation, land is must. And the kind of association, sentimental, cultural, all aspects have been discussed by scholars, and even Tripathi ji has said, and after A.K. Sharma, what I have to offer is very difficult. But one thing I must say, that wonderful presentation, lot of information, underlining each and every aspect related to land acquisition was made. And Dharmendra ji, everybody will remember why right to property was replaced. And I belong as a teacher to Darbhanga. And Darbhanga Maharaj was first person who approached before the Supreme Court that it should not be acquired. So there is a story, and after you see that the right to property was, as a fundamental right, was removed, legal right was made. And whatever the prohibitions have been made, that is the legal right of a landowner. And that has been protected in a very nice manner. And we see that in order to protect the right of the owner, and at the same time, the objective of the government, that is directed towards the development. For any development work, land is required. Earlier, it was in the hands of few persons, but whenever we talk about the land of the villages or the small farmers, that is also very significant. And people are interested, as you already have said, that now people are interested that their land should be acquired. Political intervention and request and pressures is always exerted in order to acquire the land of the important persons so that they may get money. So this is one aspect. And one aspect you have said that is very important, that earlier it was acquired more than what was needed for a project. And what has become the fallout, we see that Damad ji कहते हैं ना, Damad ji, that case is also related to the land. So that was the misuse of the political power in order to benefit at the cost of the landowners and the small land farmers. So that has been discussed, and every day we can talk about that. Since political, you know that the political interest, how that dominates over the interest of the common people. So that is one aspect. But this is a matter of satisfaction, that realizations from both sides, we see that more land than the project required is now a question of past, as you have said, and we realize also at the same time. So far as the land development of Bihar and land is concerned, we see that Naxalism started in Bengal and settled in Bihar. And because of the rich land, rice ball of Bhojpur from my native town, or you can say the area. So Bihar, so far as wetland in Bihar is enough. You know that since you have remained officer related with the land. So that is not the problem. The real problem is that political interference, and they are not interested in development. I have an article, Caste and Political System of Bihar, that suggests that politics started, after separation from Bengal, politics started in the name of caste. People were replaced who were in minority in a very insignificant number. They were in the helm of the affairs so far as the politics of that time was concerned. But they were replaced by that caste, dominant caste. Though that was the upper caste at that time, they were replaced only because of the numbers. So number game started. You see, Jharkhand was separated because of the wrong policy related to the land or the development. So Bihar is a very, you can say, enigmatic state that is very difficult to understand because of many reasons and the many factors, which I am not going to discuss. That will take a lot of time. But yes, this land acquisition is very important aspect, technical aspect, legal aspect. It involves social, economic, and political at the same time. It is very interesting when you said that the people did not accept the land acquisition because they are earning more than whatever they will get.
as the compensation of the land. So the nature of that place, the nature of the economy of that area is also associated with this aspect. So wonderful presentation, lot of questions, very pertinent questions were asked. And as a student of political science or law, I can say that law are made in order to protect the interest of the common people. And a lot of reforms have been made and right reforms have been made. And one provision you said that particular section of the society named scheduled caste, they will get more, 50,000 more than other persons. Next one is also that provision is also very important, that the proper amount will be paid, husband and wife both will be beneficiary of that. So one question was asked that is misused, and Tripathi ji rightly said, जब पैसा आ गया तो खूब खर्च करो, ऐस मौज जितना करो. That is inherent in nature. That has nothing to do with the provisions, or that is nothing to do with the objective of the land acquisition, as I understand. That requires education, and financial education is must. अभी भी हम लोग लेते हैं ना सलाह आर्थिक में कहाँ लगावें नहीं लगावें. और ये बात सही है कि जो लोग निकल गए, गांव से निकल गए, उनका डेवलपमेंट बहुत हुआ है. मेरे दादाजी को बहुत जमीन मिल रही थी जिस प्रोफेशन में वो थे, लेकिन उन्होंने शहर की जमीन इसलिए नहीं ली, उन्होंने कहा कि हमारा बाल बच्चा हमारे गांव में कोई नहीं रहेगा, इसलिए हम नहीं लेंगे. बड़ी मकान जो पहले रहता था, टूटा हुआ मकान होता था, बड़ा मकान देखने को तो मिलता है कि खास कास्ट का है, उन्होंने नहीं लिया. लेकिन कोई गाँव में नहीं है मैम, भाई जी कोई गांव में नहीं है, सब लोग गांव छोड़ दिए. और वहां बीघा का बीघा जमीन छोड़ करके 1 कट्ठा जमीन मिल जाती है, आधा कट्ठा जमीन मिल जाती है, तो बहुत खुश होते हैं. तो वो दैट इज बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ चेंज, सोशल, इकोनॉमिक, द काइंड ऑफ डेवलपमेंट वी हैव, दैट वी कैनॉट स्टॉप चेंज. इट हैज बीन एक्सेप्टेड बाय हीगल आल्सो, चेंज द इनएविटेबल ऑफ नेचर. और आप देखें, मार्क्स हैज आल्सो एक्सेप्टेड दैट. हम लोग भी कहते हैं परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है, तो चेंज विल टेक प्लेस. बट प्रोविजंस ऑफ द लॉ as stated by you, earlier provisions have been amended in order to benefit the common people, the landowner. At the same time, it is very important, like acquisition is very important. Otherwise, development तो हो ही नहीं सकता है. और डेवलपमेंट के नाम पर इफ यू आर डूइंग पॉलिटिक्स अदरवाइज, दैट इज रॉन्ग थिंग, एंड दैट मस्ट बी स्टॉप. एंड लीगल प्रोविजंस आर देयर, वी कैन अप्रोच बिफोर द कोर्ट. आपने कहा कि साहब सर्किल रेट और रियल रेट जो होता है, जो उसमें बहुत अंतर होता है, और दैट हैज बीन टेकन केयर ऑफ सो नाइसली, and that is good. And now people are interested that their land should be acquired. We see, my personal experience also support this hypothesis or this situation. So thanks a lot for giving me the opportunity, Dharmendra ji, ma'am. Very nice to know the provisions, and as a law student, lot of benefit. I have benefited a lot so far as these provisions are concerned. Tripathi ji has had a study. I don't have any study, but as a matter of hypothesis, having the experience and the knowledge because of the different talking to the different persons, and as an observer, as a research scholar, what I have observed, I can suggest you cannot force how money could be spent. And ma'am, you have rightly said कि विश्वास नहीं होता है, पैसा दे दो. बैंक में हमारे दादाजी कहा करते थे कि बैंक में पैसा तुम्हारा नहीं है, until or unless money is in your hands, that is not your money. हम लोग देखते भी हैं, बैंक जाते हैं, साहब लिंक फेल कर गया. तो फेथ की जो कमी है, डिस्ट्रस्ट है, that is all around. This is not only associated with this compensation money. So that confidence building measures must be adopted. Researches are required for further development in this area. Thanks a lot. Sincere thanks to every anybody, Bhai Sahab, for having this kind of discussion. I can say I salute you as earlier also. CSSP is a platform. हमको तो बिल्कुल लगता ही नहीं है कि साहब हम 4 साल पहले 3 साल पहले रिटायर किए हैं, और हमको तो लगता है कि अभी और रोज कुछ काम करने हैं, कुछ न कुछ नया चैलेंज मिलता है फ्रॉम सीएसएसपी. धर्मेंद्र जी, आपने तो आज बहुत समय हमको दे दिया. आज तो भाई साहब नहीं है संजय जी, इसलिए हमको तो समय काफी मिल गया, और सर की भी वॉइस थेरेपी हो रही थी. थैंक्स अ लॉट फॉर इवन फॉर दैट एस्पेक्ट आल्सो. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत धन्यवाद सर.
सर समय तो हमेशा हम लोग बहुत सुनना चाहते हैं आपको और बहुत सुनेंगे अभी। ईश्वर बस सबको सलामत रखे। बस ये बस। मंच ये मंच स्थगित नहीं होने जा रहा है सर, बहुत कुछ सुनना है अभी आप लोगों से। अभी स्थगित और आप कर भी नहीं सकते, और अभी हम लोग जब और तक अब जिंदा तो हैं स्थगित होने भी नहीं अब तो देंगे। अब तो सर लगने लगा है कि नहीं, अब आप ही की विधा हम लोग ज्यादा चलाएंगे, वो हम लोग की मजबूरी बनती जा रही है। हमको उस भारतीय ज्ञान परंपरा की तरफ भी लौटना है। ये और उसमें धर्मेंद्र जी सर माफ हमको आप कीजिएगा, ही के हम साथ इस चलना आई है। एम नॉट गोइंग टू सब्सक्राइब दिस हाइपोथेसिस और स्टेटमेंट ऑफ योर्स, बिकॉज आई नो जब मैं लिखना शुरू किया था तो प्रोफेसर ए के वर्मा सर was the editor of यूपी जर्नल, आई स्टिल रिमेम्बर एंड सैल्यूट। और एक के दो हो मैम, एक ही के जब एक का नाम लेते हैं तो एक कहते ही समझ में आता है 47, यहाँ दो एके जब बैठे हो तो मेरी क्या उपयोगिता है। बस इतनी भर है कि हम उस राइफल को साफ उफ करने में थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं, जिसको गिलहरी प्रयास किया जाता है। एंड दैट अपॉर्चुनिटी हैज बीन गिवन टू मी, थैंक्स सिंसियरली, थैंक्स टू each and everyone associated with the CSP in reaching this platform, sharing different aspects, very important and burning aspects, experts from the different fields। प्रभु दयाल सर को धन्यवाद। हम लोगों ने सुना है अभी जिसके जस्ट पहले। थैंक धन्यवाद यू वेरी सर। मच, थैंक जी यू वेरी मच। सर, अगर आपकी अनुमति हो तो दो लोगों को और 2-2 मिनट में हम सुनना चाहेंगे। अशोक जी की अगर कोई टिप्पणी हो तो, और प्रोफेसर मोहिंद्रो हम लोगों के साथ है सर नागालैंड से। अगर आप अनुमति दें तो मैं दोनों लोगों को दो दो बिल्कुल मिनट के लिए बिल्कुल। आमंत्रित करूं। ये ग्रेट अशोक जी, प्लेजर। वो हाँ, 2 मिनट। 2 मिनट की छोटी धन्यवाद सी सर। टिप्पणी आपकी। जी। धन्यवाद सर। सर जब कभी भी सभी लोगों को प्रणाम करते हुए मेरा सिर्फ एक सवाल ये है कि लैंड एक्विजिशन के लिए कुछ कानून बनने चाहिए उस आदर्श राज्य की कल्पना जैसे प्लेटो करते हैं कि जनसंख्या 5040 होनी चाहिए। अभी जिस एरिया में हम लोग रहते हैं उसमें 1/3 जो है वो ग्रीन लैंड होना चाहिए। उसी तरह से लैंड अशोक का जी, आवाज नहीं क्लियर आ रही एप्रोप्रिएट है कितना आपकी। होना चाहिए, ये होना चाहिए लैंड एक्विजिशन के संदर्भ में भी। सर अब आवाज आ रही है सर? हाँ, अभी आ रही है, बताइए, बोलिए। जी सर, मेरा ये प्रश्न है, टिप्पणी के संदर्भ में मैं बोलना चाहता हूँ कि जी। लैंड एक्विजिशन के लिए भी ठीक उसी प्रकार से कानून बनने चाहिए कि एक किसी खास एरिया में कितना परसेंट लैंड जाएगा किस एरिया में। जैसे कि जनसंख्या के बारे में प्लेटो आदर्श राज्य में बताते हैं कि निश्चित होनी चाहिए, जैसा कि पर्यावरणविद बताते हैं कि जिस एरिया में हम लोग रहते हैं 1/3 ग्रीन लैंड होना चाहिए। हमारे यहाँ स्थिति क्या है कि बनारस से कलकत्ता जाने के लिए 6 लेन बन रहा है। पहले 1 लेन था जीटी रोड, अब 5 और भी बन रहा है। कई सारे समाज वैज्ञानिक सोचते हैं कि इसकी क्या जरूरत है, न हमको उधर जाना है और किसी से पूछा भी नहीं गया। तो यहाँ लैंड इक्विजिशन के नाम पर जो कुछ लोग समझते हैं, लेकिन अधिकतर लोग झारखंड के सोचते हैं कि ये निरर्थक। हमारे यहाँ सड़क बन रही है, मॉडर्न लोग हो रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन सबसे दुख वाली बात यह है कि हमारे यहाँ पहाड़ के पहाड़ गायब हो रहे हैं। हमारे यहाँ जहाँ कहीं भी एनटीपीसी यहाँ बगल में हजारीबाग के ठीक बगल में आया है, यहाँ का वातावरण खराब हो गया, प्रदूषण बढ़ गया, और अभी बहुत सारे झड़पें हुई हैं। कुछ लोग जो हैं, गांधीवादी लोग जो हैं, चिता सत्याग्रह किए हैं, यहाँ के अखबारों में इसकी चर्चा है। क्राइम बढ़ा है। तो मेरा कहना है कि विकास को इस तरह से फिर से रिडिफाइन करना चाहिए लैंड एक्विजिशन के संदर्भ में भी, कि किस तरह से विकास हो। क्योंकि विकास सिंपल भौगोलिक संसाधन है, उसका हम लोग जस्ट रूपांतरण करते हैं अपने लालच के रूप में, सभ्यता के नाम पर। इसका एक होना चाहिए सीमा रेखा लोग, जो जो सौंदर्य है, जो आदर्श है। नहीं तो एकदम डिजर्टेड, जैसे टीएस इलियट बोलते हैं कि मेरा गांव जो है उजड़ गया, डिजर्टेड विलेज, वैसे गांव के गांव और शहर के शहर डिजर्ट बनते जा रहे हैं इस विकास के अंधी दौड़ में। तो लैंड एक्विजिशन पर एक अनुपातिक नियम बनना चाहिए कि विकास भी हो लेकिन हमारा भारत का सौंदर्य भी नहीं छीने। सभी लोगों से अशोक जी, राय मैम लिया से जाए, लेते हैं हम लोग विकास ये का एक सवाल। पैमाना। एक बड़ा धन्यवाद। मौजूद सा अप्रोच है आपका। और मैम, ये उस झारखंड की कहानी है। एक बार मैं भी उस झारखंड में गोमो से रांची रोड के वो रेलवे ट्रैक पे जा रहा था।
बीच में दामोदर वैली का एक बड़ा सा प्रोजेक्ट है। अंदर हेलीकॉप्टर से लेके और दुनिया की सारे सुख सुविधा मौजूद है। और वहीं ट्रेन से गुजरते हुए हमने देखा कि कुछ महिलाएं थी जो पानी बहुत दूर से उनको लेके आना पड़ता है। आज भी उसी बाउंड्री के सटे दुनिया के सारे सुख सुविधा मौजूद है, और बाउंड्री से पार जाने पे आज भी 5 से 5.5 किलोमीटर की दूरी से उनको पानी लेके आना पड़ता है। तो ये जो डेवलपमेंट का ये वाला अप्रोच है, इस अप्रोच से कैसे डील किया जाएगा, जिस की चिंता अशोक जी ने किया है। अशोक जी, आप हजारीबाग में, झारखंड में एक बड़ी जगह है हजारीबाग, वहाँ पे सेंट जेवियर्स कॉलेज है। आप कौन सा? नहीं, संत कोलंबा कोलंबस महान। कोलंबस कॉलेज ना? हाँ, सेंट कोलंबस जी। कॉलेज में आप प्रोफेसर हैं। प्रीति मैम। थैंक यू। डॉक्टर अशोक ने बहुत ही सॉरी बहुत एक जायज़ मुद्दा उठाया है। देखिए, एग्जिस्टेंशियल फिलोसॉफिकल लेवल पे क्वेश्चन उठता है, कई बार मेरे जहन में भी होता है, डेवलपमेंट फॉर हुम एंड एट व्हाट कॉस्ट। जी। तो अब डेवलपमेंट हो रहा है, हम मिडिल क्लास, हम अर्बन पीपल उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। प्लेन से हम हर जगह जाएंगे, बेस्ट से बेस्ट हमें सहूलियतें मिल रही हैं, बट एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज कहाँ हैं? सेंट्रल इंडिया में एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज हैं, ट्राइबल बेल्ट है, उनका क्या हाल है? तो दैट इज टोटली एक्सेप्टेबल जो अशोक जी कह रहे हैं। और ये एस्टेब्लिशमेंट का भी फेलियर है। जो आप ये बात हम कर रहे हैं कि महिलाएं दूर से पानी लेकर आ रही हैं और साथ ही साथ वहाँ पर सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना चाहिए, क्योंकि वो लोग मूक हैं, वो ज़्यादा, दे आर नॉट आर्टिकुलेट, दे आर नॉट वेरी वोकल, दे डू नॉट कमांड दैट सोशल एंड पॉलिटिकल कैपिटल कि उनकी बात सुनी जाए, उनको उनको आगे रखे डेवलपमेंट के बारे में सोचा जाए। तो दैट इज सर्टनली अ फेलियर ऑफ प्लानिंग एंड सर्टनली अ फेलियर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन कि हम सबको साथ लेके नहीं चल रहे हैं, सबका विकास के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो फैक्ट है। थैंक यू मैम। प्रोफेसर महेंद्र जी है। धर्मेंद्र जी, अगर अनुमति हो तो इसमें मेरे कुछ अनुभव हैं, अगर अनुमति हो तो हम शेयर करें। वैसे हम बहुत बोल चुके हैं, लेकिन इसमें व्यक्तिगत मेरे अनुभव हैं, इंपिरिकल अनुभव हैं मेरे। सर, रोक तो सकता नहीं मैं, लेकिन नहीं नहीं समय नहीं 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 देखते नहीं नहीं हुए। रोकना नहीं, आप जी ठीक है, जी। ओके, समझ गया, जी नहीं ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, आप। देखिए मैम, मेरे दो अनुभव है। मैं गुजरात गया था 14 के पहले, एक नेशनल सेमिनार था। अभी वहाँ वाइस चांसलर है, उस समय वो एक कॉलेज की प्रिंसिपल थी, उन्होंने बुलाया था। तो हमारी वाइफ मॉल में कुछ सामान ले रही थी। मैंने वहां क्वेश्चन किया, कहा गया कि 1-1 रुपए में जमीन बेच दी गई है, दे दी गई है लोगों को, कैसा हुआ? तो उसने एक क्वेश्चन किया कि सर, वो जमीन कोई लेने वाला नहीं था और सरकारी जमीन थी, एक्विजिशन का मामला नहीं था, लेकिन जिस तरह से लैंड की बात हो रही है सर, वो जमीन, उसमें कुछ नहीं होता था, कोई जाते नहीं थे, पानी बिजली कुछ नहीं था, लेकिन अगर सस्ते में दिया गया तो आज वहां जमीन की अगल बगल जो लैंड एक्वायर हो रहा है, काफी वहां बेनिफिट हो रहा है लोगों को, लाखों करोड़ों में बिक रहा है, वहां का काफी डेवलपमेंट हुआ। एक तो उदाहरण ये है। दूसरा, अशोक जी ने आपने पर्टिनेंट क्वेश्चन उठाया, लेकिन पहले भी पानी लाते थे, वहां एनटीसीपी का प्रोजेक्ट नहीं था, फिर भी वही स्थिति थी, दोनों का कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, एक रिश्ता है कि जब उतना उधर डेवलपमेंट हुआ तो इधर भी होना चाहिए। वो तो पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, सब एजुकेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, दैट इज, उसको आप को रिलेट कर रहे हैं तो हमको लगता है कि आप शायद न्याय नहीं कर रहे हैं। मन में जो आपकी पीड़ा है वो रिसर्च में तो आ नहीं सकती है, उसका कोरिलेशन तो बैठता नहीं है। डेवलपमेंट होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर सबको इतने वर्षों के बाद नहीं मिला, शौचालय नहीं था, तमाम चीजें नहीं थी, और तमाम चीजें अभी भी बहुत जगह नहीं है, वो अलग एस्पेक्ट है। लेकिन डेवलपमेंट नहीं होगा तो आप क्या समझ रहे हैं कि लालटेन में लोग, गांव में लोग जो रहते थे, मेरी दादी कहती थी कि तेल खरीदता, हम कहते कि तू कह लो कि सब चीज गाँव में हो जाला, घरे में हो जाला, खाली नीमक आवेला बाहर से, रोशनी कहाँ से होगी? तो बोलती थी कि तेल सारा गांव में जो जितने चीजें होती थी, हमें लगा महुआ बहुत होता है भोजपुर में, महुआ होता है, सरसों का तेल होता है, तीसी का तेल होता है, अंडी का तेल होता है। तो आज तो ये स्थिति नहीं है ना अशोक भाई कि हम लोग दीप जला करके रह सकते हैं। डेवलपमेंट तो कॉस्ट चाहिए, उसको डेवलपमेंट तो कॉस्ट लेगा। अब कितना चाहिए, नहीं चाहिए, इन्वायरमेंटलिस्ट उस पर काम कर रहे हैं, उस पर साइंटिफिक ढंग से विचार होना चाहिए। भूस्खलन हो रहा है, वो अलग एस्पेक्ट है, लेकिन इसके आधार पर ये नहीं हो, ये मेरा, इसलिए मैं दो छोटी छोटी चीजें मेरे व्यक्तिगत अनुभव की थी। झारखंड पर मैंने काम किया है, मेरी आर्टिकल भी है, जब बना नहीं था पहले ही मैंने लिख दिया था, बनांचल उस समय कहा जा रहा था, रीजनलिज्म इन इंडिया, ए केस स्टडी ऑफ झारखंड ऑब्लिक बनारस। तो ये मेरी, मुझको दो चीजें कहनी थी, क्योंकि मेरे व्यक्तिगत अनुभव थे, मैंने काफी इंटरव्यू किया था, वो बहुत वायरल भी हुआ था। थैंक यू वेरी मच
धर्मेंद्र जी, बर्दाश्त टू बियर विथ मी। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद सर। एक वर्ड यूज किया सर, उस पर मेरी बड़ी आपत्ति रहती है। मुझे कभी कभी बड़ी विनम्रता के साथ मैं कहना चाह रहा हूँ सर, जब आप ये कहते हैं या फिर कोई कहता है कि वहाँ कुछ होता नहीं है, वो उसको कोई लेने वाला नहीं था। हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री ने भी कभी किसी हिंदुस्तान के टुकड़े के बारे में कहा था कि वो तो बेकार है, नहीं नहीं बंजर है, धर्मेंद्र जी, उसका कोई उससे कोई रिलेशन नहीं उपयोग है, नहीं एक्चुअली है, कोई था उपयोग नहीं है, और बाद में रनवे बड़ी रनवे आलोचना होती है सर नहीं नहीं, उसकी। वो जो एरिया तो था ना धर्मेंद्र जी, वहाँ जी एक्चुअली कोई नहीं जाते थे। आज वो बहुत हरा भरा और सर, इंडस्ट्री से भर गया है। वो मैं कह आज रहा था, भी मैं वो वो नहीं आज कह भी सकता। कंडीशन देखिए, है। मैं वो नहीं जिस कह सकता। जी हिंदुस्तान जी का इतना जमीन भी हमारा मान है, स्वाभिमान है। मेरे मेरे लिए और वही है उस सर, वो नहीं नहीं, जिस बिल्कुल। इमोशनल कास्ट की बात करी हाँ थी नहीं नहीं नहीं, आपने, हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल। वो चीज बड़ा अजीब हो और आपसे जाती है बेहतर, आपसे भाई सर। साहब से बेहतर हमको कौन जानता है कि उसके लिए तो हम सब जी कुछ दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अब अगर और किसी का कोई सवाल हो या फिर कुछ और कहना चाह रहा हो तो ठीक है, नहीं तो फिर हम सर की तरफ जाएंगे। आज के इस पूरे तिवारी सर मुनिंद्रो भी को आप बैठे कह हुए रहे थे, हैं। मुनिंद्रो को कह रहे थे, हाँ, मणिपुर। Mohindro, Professor Mohindro, ever here? Just I want a very short remark from you, Professor Mohindro from Nagaland, मणिपुर। Manipur. Yes sir, from Manipur. Professor Mohindro देर। is joined, sir, but probably he is not available here. अच्छा अच्छा, है So तो हाँ, इज हम चाह कनेक्टेड। रहे थे, चूंकि मणिपुर भी बहुत कुछ जल रहा है इस समय, और वहां से एक टिप्पणी आती तो बड़ा अच्छा लगता, लेकिन अभी संभवतः मोहिंद्रो हम लोग को सुन नहीं पा रहे हैं। तो मैं सीधे सर की तरफ जाऊंगा वनस्थली, आज। वनस्थली से कोई था, आपने बताया था। अभी नहीं है, मैम चली गई हैं। मैम वो निर्मला मैम थी, प्रोफेसर निर्मला अच्छा मैम थी। अच्छा। बनस्थली। जी, वो चली गई हैं। सर सीधे मैं आपको आमंत्रित करूंगा सर। पूरे 1.5 घंटे से ऊपर की ग्रेट। चर्चा, पौने 2 घंटे की चर्चा रही। बहुत ही स्पष्टता के साथ, एक एक वर्ड के साथ मैम ने रखा पूरे के पूरे एक्ट को, और उस पर एक अच्छी चर्चा भी हुई, सार्थक चर्चा हुई तिवारी सर के द्वारा, शर्मा सर के द्वारा, फिर जितेंद्र सर के द्वारा। सर आपसे एक छोटी सी टिप्पणी हम लोग चाहेंगे, कंक्लूडिंग टिप्पणी, जिसके साथ हम लोग आज के इस मीटिंग को समाप्त करेंगे। डॉक्टर के वर्मा सर। धन्यवाद धर्मेंद्र जी। सबसे तो पहले मैं अपनी फॉर्मर स्टूडेंट एंड अ ब्रिलियंट स्टूडेंट टू प्रीति जैन को मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत अच्छे ढंग से आपने हर विषय को हैंडल किया। और शायद एक टीचर के लिए इससे खुशी का कोई ज़्यादा मौका होता नहीं है, जब वो अपने स्टूडेंट्स को इस तरह से परफॉर्म करते हुए देखे। तो बहुत ही, एक तो खुशी हो रही है, और दूसरी चीज कि ये विषय वास्तव में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, और इसके लिए कोई भी बात बहुत सटीकता से कह पाना बहुत ही, मतलब मुश्किल है। क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि जैसे कि अभी जितेंद्र जी ने बात कही कि डेवलपमेंट तो कॉस्ट लेगा, और उस डेवलपमेंट की विधा से भी हम लोग नहीं बच सकते हैं, और अधिग्रहण की जो त्रासदी है उसको भी हमें झेलना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ये गवर्नेंस का जो हमारा मॉडल है, ये उसके डोमेन की चीज है कि वो कैसे इसको हैंडल करे। और बैलेंसिंग एक्ट है ये, उसमें कभी भी कोई पूर्ण रूप से सफल होगा ऐसा कह पाना थोड़ा कठिन है, और सबको संतुष्ट कर पाएगा ये भी कहना कठिन है, क्योंकि वो एक अजीब सी बैलेंसिंग एक्ट है कि आपको डेवलपमेंट भी चाहिए, और अपने लोगों की, डिस्प्लेस लोगों की, या जिनकी लैंड एक्वायर की गई है उनकी जो त्रासदी है, शॉर्ट टर्म त्रासदी है, मीडियम टर्म त्रासदी है, लॉन्ग टर्म उनकी जो परेशानियां हैं, उसको भी एड्रेस कहाँ तक किया जा सकेगा, इसकी भी हर सरकार की अपनी एक सीमाएं होती हैं। ज्यादातर अप्रोच ये है कि पैसा दो और अपने को फ्री करो, विच इज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल, विच इज वेरी बैड, और जिसको कि ये कहना चाहिए कि वो प्रॉपर गवर्नेंस मॉडल नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें एक एक पक्ष को पूरी तरह से उसको क्लीन चिट दे दी जाती है, और वो नहीं दी जानी चाहिए, क्या हो गया इनका अंतिम लेक्चर होगा। एंड दैट इज सिविक एंगेजमेंट। कि
जिसकी जमीन गई या अधिग्रहण हुई वो एक पक्ष है, सरकार जिसने जमीन ली वो एक दूसरा पक्ष है। लेकिन एक जो जनता जनार्दन है, समाज है, वो इससे अपने को बिल्कुल अलग रखता है। अलग इसलिए रखता है कि लोग इंडिविजुअल टर्म्स में सोचते हैं कि भाई हमारी जमीन गई या हमारी जमीन नहीं गई, और हमको क्या मिला और हमको क्या नहीं मिला, और हमको क्या मिलना चाहिए था और क्या उतना नहीं मिला, और आज क्या होगा और कैसे उसको हम आगे खर्च करेंगे, ये सब तमाम इश्यूज होते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट ने नई मशीनरी इवॉल्व किया है, जिसमें एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट का मॉडल, ट्रांसपेरेंसी का मॉडल, अकाउंटेबिलिटी का मॉडल, टाइम फ्रेम का मॉडल लाने की जो कोशिश की गई है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक एडवांसमेंट मुझे दिखाई दिया कि एक्विजिशन के प्रोसेस में एकदम से तो कोई आइडियल सिचुएशन हो नहीं सकती है, लेकिन एक आई थिंक इट्स ए बिट ऑफ वन स्टेप अहेड ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉ। तो हम बहुत सारे लीगल तरीकों से चीज़ों को हैंडल करना चाहते हैं। इंडिया की जो साइकोलॉजी है वो हर प्रॉब्लम को एक लीगल फ्रेमवर्क से हल करना चाहती है, जबकि लीगल लिमिटेशंस को हम अप्रिशिएट नहीं करते। जैसे अभी उसका जिक्र हुआ, प्रीति जी ने बताया कि भाई 10-10 साल जब उन्होंने इस मुद्दे को देखा तो 10-10 साल 20-20 साल से वो केसेस चल रहे थे, उसके कंपनसेशन के इश्यूज आए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि लीगल रूट पे जब आप जाएंगे चीजों को हैंडल करने तो वो होंगी, क्योंकि उसका एक जुडिशियल प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में टाइम फैक्टर होता है, उस फैक्टर में मनी फैक्टर होता है, हरेसमेंट फैक्टर होता है, वो सब आपको झेलना पड़ेगा। तो आप लड़िए, वो भी रूट कुछ लोग लेते ही हैं। लेकिन जो सिविक एंगेजमेंट का इशू है कि कोई सोशल कॉन्शियसनेस या कोई सोशल इस प्रकार से मूवमेंट कंट्री में नहीं बन पाया, या कोई सोशल डिस्कोर्स नहीं डेवलप हो पाया कि लैंड एक्विजिशन का एक प्रॉपर तरीका क्या होना चाहिए। और ये जो प्रॉपर तरीका है, ये मुझे नहीं लगता कि ये कोई यूनिफॉर्म नेशनल उसके लिए तरीका हो सकता है, और उसकी वजहें हैं। और उसकी वजहें हैं कि जैसे कि अर्बन लैंड एक्विजिशन है और रूरल लैंड एक्विजिशन है, या ट्राइबल एरियाज के लैंड एक्विजिशंस हैं। तो बहुत सारी, अब जैसे अशोक राम जी ने कहा कि भाई हमारे यहाँ से एक लेन जाती थी और 5 लेन बन रही है, तो हमसे उससे क्या लेना देना है, हमें तो उधर जाना ही नहीं है। बट सवाल ये कि हम अपने स्टेट के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरे कंट्री की कनेक्टिविटी के बारे में सोच रही है कि भाई आपके स्टेट से ही आपको केवल नहीं गुजरना है, आपके स्टेट से पूरे भारत को गुजरना है। और आज से 50 साल और 100 साल के बाद जिस प्रकार से डेंसिटी ऑन रोड्स बढ़ रही है, जिस प्रकार से सप्लाई चेन की रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं, जिस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन की नीड्स बढ़ रही हैं, ये सब चीजें तो आपको मतलब दे आर एक्चुअली इनएविटेबल, आप उससे बच नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि हमें तो सब बंगाल जाना नहीं है, हमारे यहाँ से क्यों आप रोड गुजार रहे हैं। तो बहुत अच्छे ढंग से जितेंद्र जी ने उस बात को ऑलरेडी पुट अप कर दिया है, इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है, और इसमें केवल इतनी ही उम्मीद सरकार से की जा सकती है कि ये जो लीगल फ्रेमवर्क नया बनाया है, इसमें बराबर कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट की तरफ हमें बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। एक नेशनल लेवल पे डायलॉग और डिस्कोर्स होते रहना चाहिए, R&D होते रहने चाहिए कि भाई और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो इसको और बेहतर बताएं, पीपुल फ्रेंडली बताएं, पीपुल फ्रेंडली बनाएं, और डेवलपमेंट फ्रेंडली भी बनाएं। तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे ढंग से प्रोफेसर तिवारी ने, प्रोफेसर शर्मा ने जो चीज़ें उठाई या जो अपनी चिंताएं जाहिर की, और जितेंद्र जी ने भी बहुत अच्छे ढंग से उसको पुटअप किया। सभी लोगों ने एक बहुत, जो हम हमेशा कहते हैं कि भाई ये CSSP का प्लेटफॉर्म कोई फाइनैलिटी तक पहुंच जाए, कोई डिस्कशन इसके लिए नहीं हुआ है। ये कलेक्टिव लर्निंग का प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि हम सब लोग जो कुछ भी हमको समझ में आता है निर्भीकता पूर्वक और शांति ढंग से, पूर्ण ढंग से अपनी बातों को रखते हैं, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि किसी भी विषय के विविध आयाम क्या है, वेरियस डायमेंशंस क्या हैं, और उसे एक हमारी जो थिंकिंग है वो थोड़ा सा ब्रॉडन होती है कि भाई हम चीज़ों को होलिस्टिकली सोच सके, बजाय इसके कि एक लॉपसाइडेड एंगल से हम चीज़ों को देखने की कोशिश करें।
तो मुझे लगता है कि मेरे लिए बड़ा ही एडुकेटिव रहा ये सेशन, और मुझे लगता है कि हम सभी लोगों के लिए ये बहुत ही ज्ञानवर्धक था। हम लोगों ने इस लॉ के डिफरेंट प्रोविजंस के बारे में अच्छी तरह से जाना, उसको और आगे हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। और इस चर्चा में आप सब लोग आए, आपने सहभागिता की, अपने विचार व्यक्त किए, इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और यही हमारी CSSP की भावना है कि कम से कम हम लोग महीने में एक बार किसी एक मुद्दे पे सब लोग एक दूसरे को देख लेते हैं, और इस वर्चुअल वर्ल्ड को धन्यवाद देना चाहिए कि कम से कम दर्शन लाभ हो जाते हैं। अदरवाइज तो ये भी संभव नहीं था, टेलीफोन पे तो केवल बात ही होती है, लेकिन इस तरीके से एक लगता है जैसे बिल्कुल पास में बैठे हुए हैं, बड़ी अच्छी फील आती है। और अब तो जैसे आदत सी पड़ गई है कि अगर महीने में एक दो बार इस प्रकार के प्रोग्राम्स ना हो तो जैसे लगता है कुछ मिस हो रहा हो। सही है। आज धर्मेंद्र जी ने बड़े अच्छे ढंग से संचालन किया, विषय को अच्छे ढंग से ओपन किया, और मुझे लगता है कि आई पर्सनली फील दैट दिस प्रोग्राम ऑफ टुडे was a very well conducted and I think well discussed, well analyzed program, or gave lot of food for thought to all of us, from legal angle, from sociological angle, from economic angle, from political angle to from other so many angles. The issue was threadbarely analyzed, and for motivating all this discussion, I congratulate Preeti very much, and you made a very comprehensive, elaborate presentation, and thank you very much. So I thank you all for coming today, and back to Dharmendra ji. बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैम, आपने महसूस किया होगा कि सेवानिवृत्ति के बाद के उत्साहजनक जीवन का स्वागत करने के लिए ये मंच पूरी तरह से आपका स्वागत करता है, और उम्मीद करता है कि इस मंच पर आप रहेगी। बस थोड़ी देर के लिए आदमी यहाँ कोई एक्सपर्ट रहता है, और उसके बाद सारे के सारे लोग बिल्कुल एक संवाद जैसा हो जाता है कि हम सारे लोग आपस में बैठ के संवाद करते हैं, और हम अशोक जी जैसे लोग तो केवल श्रोता ही रहते हैं इसमें। सर जैसे लोगों की उपस्थिति रहती है तो हम लोग अभिभूत होते हैं कि हम लोग अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि अभी हम लोग उस पीढ़ी में हैं जहां हम लोगों को अमृत पान करने का अवसर मिलता है आप लोगों के माध्यम से। आपका बहुत बहुत आभार। प्रोफेसर AP तिवारी सर का विशेष आभार मैं करूंगा, इसलिए कि आज के इस डिबेट से एक टॉपिक निकला है, और हम सर से बात करके मैं पुनः उस टॉपिक पर फिर सर को परेशान करना चाहेंगे। तिवारी सर से हम लोग सुनेंगे डेवलपमेंट फॉर होम, और इस पर चर्चा जरूर कराएंगे हम लोग सर से। मुझे लगता है कि इस पर बहुत एक अच्छा विमर्श होना चाहिए। चारों तरफ चीजें ये चल रही हैं। सर आपका विशेष आभार। जितेंद्र सर, सरोज सर, अरुण सर, आपकी सहभागिता हम लोगों को प्राप्त हो पाती है। यही लगता है कि हम लोग बहुत अभिभूत होते हैं आप सबकी उपस्थिति मात्र से। अशोक जी हैं, महेंद्रो हैं, प्रगति लखनऊ से, पाटना, आराध्या, बहुत सारे लोग जिनकी उपस्थिति आज हो पाई। बहुत सारे लोग वो जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, यूट्यूब पर भी चल रहा है सर, वहाँ भी ये सारे लोग, सारा प्रोग्राम लोगों के द्वारा देखा जा रहा है। तो बहुत अच्छा लगता है CSSP का अपना एक छोटा सा प्रयास। और हम तो अपने में ही संतुष्ट रहते हैं कि हाँ, हम लोगों ने जो किया वो लोगों तक पहुंचा, लोग उसको समझते हैं, सुनते हैं और पसंद करते हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है। बहुत बहुत आभार आप सभी का। अंतिम सर के लिए आभार का कोई शब्द अभी हमारी डिक्शनरी में बन नहीं पाया, मैं बस प्रणाम ही कर पाता हूँ सर को। वो हम और अशोक जी हम लोगों ने तय किया हुआ है कि हमारी पीढ़ी सर को आभार ज्ञापित नहीं करेगी। जब कभी कुछ बनेगा डिक्शनरी में, कोई ऐसा वर्ड हम लोगों को मिलेगा तो शायद हम लोग प्रयोग करेंगे। बाकी केवल प्रणाम और शरण स्पर्श करके ही हम लोग अपना काम चला लेंगे अपने लिए। बहुत बहुत आभार आप सभी का, सादर प्रणाम। Thank you.